Well, there are six trigonometric functions in the domain range. इसका हम ग्राफ डिस्कस करेंगे. So first one is what is domain? Possible values of the independent variable which gives real values of the dependent variable. Sorry, independent. All possible values of the independent variable, real values of the dependent variable. Okay. Okay. Correct. Now, what is the portion of next major test? I don't know. I think in your group already given, na? Major test portion given or not? Ganesh sir had been posted in your batch, I think, in your house. It's up to, I'm not sure, up to multiple submultiple. Am I correct? Or up to compound angle? What was that portion, Kirti? Sir, it's written trigonometric RI angles, compound angles, and basic maths. Ratio and identities, compound angles. Okay, let me check. Trigonometry, ratio and identities, angles, compound angles, basic maths. First is the domain. The set of values of x if y is equal to f of x. If y is equal to f of x, then the set of values of x for which f of x defined, for which f of x defined. Okay. For an example, f of x is the 1 by x. What is your domain? If f of x is the 1 by x, X is not equal to 0. x is not equal to 0. बाकी सब कुछ होगा. Okay. In general, function from real to real. What we are discussing, function from real to real. Okay. So domain is domain. Domain you can write express like this. df. D stand for domain. F is the domain of the function. Okay. So domain is the all real number other than 0. All real number except 0. आप ऐसे यूज कर सकते हो स्लैश जैसा, or you can use minus sign also. Okay, but don't call it minus. Except all real number except 0. If f of x is equal to px plus 7,
What is the domain? All real numbers. All real number. It's never undefined. आपको चेक क्या करना पड़ेगा? Where it become undefined. So f of x is the 3x plus 7. It is defined everywhere. Okay. So everywhere means all real numbers. So domain of this function became real number. F of x is the 1 upon under root x square minus 4. Square minus 4 is greater than or equal Yes. to x minus 4 is greater than or equal to 0. X square minus 4 greater than equal to 0. So greater than only. Greater than 0. Strictly greater than 0. Equal 0 not possible. Okay. If it is equal 0, then function became undefined. So it is strictly more than 0 only. More than 0 means, but you have to find out the set of values of x. Okay, you can't keep track this. So it is x plus 2 into x minus 2 greater than 0. So now you can use your Baker method. Critical points are minus 1, plus 2, plus, minus, plus. Then what is the domain? Minus infinity to minus 2, even 2 to infinity. 2 to infinity, bracket. Parenthesis. Hmm? Parenthesis. Round brackets. All open. इसको open bracket बोलते हैं. माइनस इंफिनिट से लेके -2 ओपन, इंफिनिटी ऑलवेज ओपन, यूनियन 2 to infinity. Okay, these are the domain. What is range? The set of values of y if y is a function of x. The set of values of y for which f of x also defined. Okay. Once you get domain, then after you will get the range. Yeah? Range the set of values of y. If y is equal to f of x, the set of values of y. Then the set of values of y is called range, and denoted by ऐसे RF. R stand for range. Yeah? For an example, f of x is equal to 2x minus 9. Range is what? All real number. All real number. Very good. X be real, y be real. Okay. Any real value you can get. Range of is the f of x is equal to x square plus 2. Range. Yes. X square plus 2. You know x square always greater than equal to 0. No. That implies x square plus 2 is what? Always more than equal to 2. More than equal to means how to write in the form of set? 2 से लेके infinity, too close, 2 to infinity.
f of x is the 1 by x. Range f of x is the 1 by x. Range is what? So domain is what? 1 by x. R minus 0. R except 0. Okay. Don't call minus. R except 0 or R other than 0. आप कुछ भी रियल डालोगे, रिजल्ट भी रियल होगा. Yes, sir. आपको जो भी रियल चाहिए मैं दिला दूंगा, बट एक एक चीज नहीं होगा. क्या नहीं होगा? 0 नहीं हो सकता. 0 नहीं होगा. Here also range is the all real number Except except 0. Correct? This is all about your domain and range. You will get detail in your function chapter. कुछ लिखना है तो लिख लो. So you can just scroll it now.
Done. Yes, sir. So already you know there are 6 trigonometric functions. Y is equal to f of x. 1 is the sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x. Now tell me for what value of x sin x undefined. Sin x कहाँ पे undefined होता है? In between 0 to 90 degree, is there any No, sir, it is defined everywhere. is defined everywhere. So domain क्या होगा? minus infinity to infinity. All real number. Okay. Or you can write minus infinite से लेके plus. Okay. Both remain same. Any one you can write. What about cos? Same. All real number. आपको Same. सिर्फ चेक करना है 0 to 90. Is there any case of undefined? No, sir. No. So it is everywhere defined. Tan Sir, at 90. 90. But we are checking here all real number. In between minus infinity to plus infinity you have to check. Okay. Sin theta, sorry, tan theta कहाँ पे undefined हुआ था? एक्सिस के हिसाब से. Tan theta here undefined, 90 degree. Also Yes, sir. minus 90 or 270 also you can say. ठीक है ना? That means tan theta undefined on y axis. Y axis पर वो undefined था. Okay. तो y axis का general solution क्या है? Sorry, what is the general? In general, how to write your y axis? If you collect all angles of y axis. X is equal to 0. No. I'm not asking about equation. I'm asking about angle of y axis, collection of angles of y axis in general form. 2n plus 1 pi by 2. Odd pi by 2. Yes, very good. 2n plus 1 into pi by 2. This is the y axis. X axis, both N pi. and pi. Only y axis. Only positive y axis. 4n plus 1. 4n plus 1 into pi by 2. Only negative y axis. 4n minus 1 pi. Yes. Four n minus 1 into pi by 2, or you can call 2n pi plus pi by 2. This one you can call 2n pi minus pi by 2 also. Okay. Only positive x axis. Even pi. 2n pi. Only negative x axis. Odd pi. इतना सारे मैंने दिया था. Now you just tell. Tan x, you know, tan theta undefined on y axis. That means when your angle is the 2n plus 1 into pi by 2, total y axis. Okay. Total y axis is your odd pi by 2. Total x axis is the n pi.
y-axis odd pi by 2, or you can write 2n plus 1 into pi by 2. Total x-axis n pi. All the cases n belongs to integer. So tan theta undefined for all y-axis angle. Okay. So how to write your domain? Then after everywhere defined. Tan theta everywhere defined other than y-axis. Okay. How to write your domain? Domain को कैसे लिखो? R minus 2n plus 1 pi by 2. 2n plus 1 into where n belongs to into. Integer. Where cot theta undefined? R minus n pi. Yes. X axis पर cot undefined होता है. Okay. R difference n pi. N belongs to integer. Sec theta. Where sec theta undefined? If cos theta 0, then sec theta undefined. है ना? R minus 2n plus 1 pi by 2. 0. Sec theta undefined means Sir, at cos 9 theta 0. Cos theta कहाँ पे 0 होता है? at pi by 2. X axis और y axis? Y. Y. Y axis. 90 पर 0 मतलब undefined होता है. Sorry, cos theta 90 पर cos 0 होता है. Okay. Y axis, full y axis. Then क्या लिखोगे? R R minus difference 2n plus 1 pi by 2. 1 plus 1 into pi by 2. Okay. इसको एक शॉर्ट में लिखना है तो लिख सकते हो. रहने दो एक शॉर्ट में. Cosec theta. Cosec theta undefined if sin theta 0. Undefined on x axis. X axis. R difference n pi. All the cases your n belongs to correct. Yes, sir. Now range of sin theta. Sin theta in between 0 to 90. Range क्या है? 0 to 1. 0 to 1. Then second quadrant also 1 से लेके 0. It is 0 to 1. Then second quadrant. In second quadrant sin theta positive. वही एंगल होता है ना, सप्लीमेंटरी एंगल होता है. Yes, sir. ओके. तो ये भी 0 to 1. थर्ड क्वाड्रेंट. 0 थर्ड to क्वाड्रेंट 1. sin theta नेगेटिव. ओके. व्हाट यू गॉट 0 to 1 इसका ही नेगेटिव मिलेगा. मींस यू विल गेट -1 to 0. Here 0 to 1. Here also 0 to 1. Third quadrant negative of first quadrant. So -1 to 0. Fourth quadrant -1 to 0. -1 to 0. Then what you got range? -1 to 1. -1 to total range became -1 to 1. Am I correct? Yes, sir. So range of sin theta or sin x is the -1 to +1. Cos theta Sir, same. Same. -1. -1 to +1. Tan theta tan value in first quadrant 0 to infinity. 0 to infinity means all positive real number including 0 also. Second quadrant -infinity to 0. -infinity to 0 exactly negative of that. Second quadrant में क्या होगा? tan theta negative होगा. Again third quadrant positive 0 to infinity. Again -infinity to 0. What is the range now?
real numbers. All real number. Okay. Minus infinity to plus infinity, or you can write all real number. Got cot theta or cot x range. Cot x is the 1 upon tan x. 1 upon real number क्या होता है? Infinity to 0. हाँ? minus infinity comma 0 union 0 comma. Cot theta 0 नहीं आता है क्या? So in What? first quadrant it will be 0 comma infinity. Yes, first quadrant 0 to infinity. Again you will get minus infinity to 0. 90 degree. Cot 90 degree is the 0 na? Yes, sir. Okay. So again you will get minus infinity to 0. Sorry, minus infinity to plus infinity or r. Sec theta. Sec theta is the 1 upon cos theta. Cos theta range is the -1 to +1. Those value lies in between -1 to +1. They are called proper fraction. Those value lies in between -1 to +1. They are called proper fraction. Okay. Those value lies in between -1 to +1. They are called proper fraction. Proper fraction means numerator value less than denominator. Okay. So those value lies in between 0 to 1. They are called proper fraction. And -1 to 0 means negative of the proper fraction. Okay. Fraction never negative. Fraction always positive. So 0 to 1 means proper fraction. So reciprocal of proper fraction is what? Reciprocal of proper fraction. This is called proper fraction. Reciprocal of this was what? Greater than 1. Greater than 5 by 3. It is always greater than equal to 1. You got my point? Yes, sir. Okay. तो cos थीटा का सॉरी sec थीटा का रेंज क्या होगा? 1 से बड़ा होगा. More than equal to for positive side. For negative case, less than equal to minus. -1. Okay. So range of sec x is the minus infinity to -1 closed. क्योंकि when cos x -1 sec x भी -1 होता है. Union 1 to, or you can write total real number except -1 to +1. पूरे रियल नंबर से -1 to +1 को रिमूव कर दो. रिमूव -1 to +1 फ्रॉम टोटल रियल नंबर, बट -1 ओपन रहेगा. इफ यू रिमूव क्लोज साइन, इफ यू रिमूव क्लोज पार्ट, देन ओपन हो जाता है. तो -1 क्लोज रिमूव मत करना. क्लोज रिमूव करोगे तो -1 चला जाएगा, +1 भी चला जाएगा. ओके. तो रिमूव -1 to +1 ओपन, नॉट क्लोज. Otherwise write like this. This is the better one. Minus infinity to -1 union 1 to infinity. cosec का क्या होगा? Sin cos range same. Same range. तो sec cosec का भी range same होगा. ठीक है. This one also remains same. Minus infinity to -1 union 1 to. Correct. So these are all about your function, trigonometric functions, domain and range. आपको ये याद रखना पड़ेगा. You have to remember all these 6. Right.
Then Yes, sir. okay. Now graph. Y is equal to sin x. Right. 0, pi, 2 pi, minus pi, minus 5, 3 pi by 2, minus pi by 2, minus 3 pi by 2. Sin 0, 0. इसके बाद वो इंक्रीज होता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है वैल्यू ना. 30 डिग्री 1/2, 40 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, and again increase 90 degree 1. So it's in, let this is 1. So it's gradually increase up to, ये कर्व वाइज होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, to 1. Starts with 0 up to 1, right? Up to 90 degree it will decrease 1 to 0, 0 to 1, second quadrant positive, again 1 to 0, third quadrant negative, 0 to -1, 0 to -1, fourth quadrant negative, again -1 to 0. Correct? So this is the graph of sin x, 0 to 2 pi. Negative. Sin of minus theta is what? Minus sin theta. Minus sin theta. Minus sin theta. So this side is the negative of right side. So what you got your figure in graph in your first and second quadrant, it is half loop. Okay. तो एग्जैक्टली उसका नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ रहेगा उसका अपोजिट मतलब नीचे होगा. नेगेटिव ऑफ दैट, जो नीचे है उसका ऊपर आ जाएगा. Okay. So you'll get graph like this. Minus by 2, 0. Again, you'll get. Then minus 2 pi to pi. You'll get upper loop. So this is the graph of
sin थीटा इन बिटवीन -2 पाई टू 2 पाई। इसके बाद यही रिपीट करता रहेगा ऐसे ही। दैट विल लर्न अबाउट पीरियोडिसिटी, उसमें करेंगे। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन ए। आप इसको छोटे फॉर्मेट में करोगे तो you get graph like this. It's like wave. ऐसे ऐसे वो चलता रहेगा। इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन है। Okay. एवरी लूप बिकम 0 मतलब पाई इंटरवल है। पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई like that, and it's lies in between -1 to +1. Your graph never cross the y value never 1, sorry, more than 1 or less than -1. It's lies in between -1 to +1. And if you know graph, you can tell about domain range. What is the range? Range is the -1 to +1. What is the domain? Every x के लिए आपके पास ग्राफ है। For every x you have graph. That's why domain is the all real number. Okay, this is the graph of A. And one more concept is the periodic function. Just remember, what is periodic function? Period क्या होता है? After a particular interval. After certain interval के बाद वो repeat करना चाहिए। Okay, from graph कौन सा interval में ये repeat कर रहा है? 2 pi. 2 pi. See, 0 to 2 pi graph, 0 to pi graph same, it's not same as pi to 2 pi graph, उल्टा हो रहा है। Okay, but if you take 0 to 2 pi graph, then 2 pi to 4 pi graph remains same. 4 pi to 6 pi graph remain same. 6 pi to 8 pi का graph remain same. तो इसका period बोला जाता है कि 2 pi. Okay, that is called fundamental period. उसके बारे में हम will discuss later. Y is equal to sin x. We have periodic function with fundamental period two pi. Sin x we have periodic function. It is periodic function. Every trigonometric function is the periodic function. Sin x we have periodic function with fundamental period 2 pi. Fundamental period मतलब least interval for which function defined. Sorry, repeating. If you take 0 to 4 pi also, आपका ग्राफ रिपीट कर रहा है। चेक करो, सेम ग्राफ। 0 to 4 pi ग्राफ सेम आज 4 pi से लेके 8 pi। ये सब चेक करो। Yes, sir.
0 to 4 pi का ग्राफ जैसे मिला ना, 4 pi से लेके 8 pi ग्राफ यू आर गेटिंग सेम थिंग. Okay, 4 pi also period. But what is fundamental period? Least period. Least period is the 2 pi. 0 to 2 pi, 2 pi to 4 pi remains same, 4 pi to 6 pi remains same, graph wise. That's why it is called fundamental period. We'll discuss later. Just note it down. This is the graph of sin x domain. From graph you can tell domain, range and period. Clearly domain is the all real number because everywhere graph existing, and range is the -1 to like a +1, and it is periodic function of fundamental period 2 pi. चेक मैंने ग्राफ में भी दिखा, मतलब ये कर रहा हूँ, इसको मैं शेयर हटा रहा हूँ. This is the graph of y is equal to sin x. X का change करना. Share the graph. Okay. 0 to pi. Pi value is the 3 point something. तो हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, what you are considering 1 unit, उसका like 3 parts मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 जैसा होना चाहिए, so that आपका ग्राफ थोड़ा ठीक से दिखे.
Done. So 1 minute. Next, graph of y is equal to cos x. Y this is pi by 2. Three pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, like that. Cos 0, 1. 1. Cos 90, 0. Okay. Then second quadrant. In second quadrant, it is negative. Cos pi का value -1. In third quadrant, negative, but -1 to 0. Fourth quadrant, 0 to 1, positive. Then next, you'll get something. Okay. Cos of minus theta, Cos theta. cos theta. तो एग्जैक्ट वही ग्राफ होगा, उसका मिरर इमेज हो जाएगा. Correct. So you'll get graph like this. Here also range is -1 to लेके +1, and everywhere graph existing. तो domain हुआ all real, range -1 to +1. In which interval it is repeating? Least interval. Least interval. 2
pi. So 2 pi only. है ना, 0 to 2 pi graph remain 2 pi to 4 pi graph, correct? Yes, sir. So this one also periodic function of fundamental period 2 pi. Y is equal to cos x, be a periodic function with fundamental period added. Done. Okay. See, this is the graph of y is equal to cos x. When it is 0, 1, pi by 2, 0, for pi minus 1, 3 pi by 2, 0, 2 pi. See 0 to 2 pi graph. Difficult. 0 to 2 pi graph same as 2 pi से लेके 4 pi graph. 2 pi to 4 pi graph remains same. Okay. And आज cos of minus theta is the cos theta. तो पॉजिटिव साइड में जैसे ग्राफ मिलेगा, नेगेटिव साइड also will get same similar graph, mirror image. If you consider this one as the mirror, y axis as mirror, then ये इसका mirror image हो रहा है. Okay.
इसके ऊपर मैं वाई साइन एक्स ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। Okay. Here blue graph is the sine and a brick color graph is the cos graph. What about this intersection point? Can you tell? 45 degrees. 45 degree. Okay. So if you check 0 to 45 degree, let's see. This is your 45 degree. Huh? If you check 0 to 45 degree, your cos graph lies above the sine graph. Your cos graph lies above the sine graph. Then value of cos theta always more than, तो इसका y का वैल्यू क्या होगा? बड़ा रहेगा ना? cos का y का वैल्यू more than sine value. Yes, sir. So 0 to 45 degree, 0 to 45 degree cos theta more than sine theta. Then what about next intersection point? Which point this one? X value क्या होगा इसका? 35 degree. हाँ? 135. नहीं 135 नहीं. 5 plus 45. 5 plus 45 means 225 degree. 225 degree. तो 45 से लेके नेक्स्ट पाई इंटरवल, 45 से लेके नेक्स्ट पाई इंटरवल, your sin x more than cos x because sin x graph lies above the cos x. Then next interval, next intersection point is the 2 pi plus pi by 4. 2 pi plus pi by 4. Again, interval is the 180 degree. 225 से लेके 360 plus 25 मतलब 385. Okay, there in that interval cos x more than sin x. So if you know graph, आप बता सकते हो किसका वैल्यू बड़ा है किसका वैल्यू छोटा है. If your graph lies above the, if f of x lies above the g of x, then on that interval f of x always more than g of x. जो ग्राफ ऊपर रहता है उसका वैल्यू बड़ा होता है ये इंटरवल में. In this interval, this is minus 135 to 45, minus 135 to 45 degree, cos x more than sin x. तो every पाई इंटरवल में ये चेंज हो जाएगा. ठीक है, ये सब आप मार्क कर सकते हो. So intersection point is n pi plus pi by 4. Yes, n pi plus pi by 4 every, ये pi by 4, then pi plus pi by 4, 2 pi plus pi by 4, 3 pi plus pi by 4, like that. Intersection between sine and cos. Is that clear? Yes, sir. Actually, there are many concepts in graphs actually. Next, y is equal to tan x.
So you have to draw the combined graph of sin x and cos x. हाँ, you can draw. If you draw combined, then आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलता है over two graphs. इसलिए मैंने एक्चुअली इसको सोचा, मतलब मैं इन जनरल लास्ट को पढ़ाता हूँ इसको, सो दैट आपको थोड़ा मैच्योरिटी आ जाता है वो टाइम पे अंडरस्टैंडिंग में. जीरो y/2 y like that, minus y/2 tan x क्या होगा, tan 0 0. 0. तो ग्रेजुअली वो इंक्रीज करता रहता है करता रहता है करता रहता है अप टू 90 पर क्या हो जाता है, Infinity. Unity. टुवर्ड्स इंफिनिटी की तरफ चला जाता है. तो ये लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा. योर ग्राफ नेवर टच द y is equal to, sorry, x equal to pi/2 line. Okay. And tan of minus x, No, but along pi by 2 only it becomes infinity. No, the slope becomes infinity. हाँ, तो that's why the graph never touch your x equal to pi/2. ये लाइन को कभी टच नहीं करता है. Okay. And it looks like tangent. आप दूर से देखोगे तो it looks like tangent, but never tangent क्या करता है, it's always touch the curve at one point. Okay. This is called chord line or secant line. This is called secant line. It's intersect your curve at two different points. This line is called tangent line. Okay. But here this line is called asymptote line. Asymptote line means it looks like tangent but never touch your curve at finite point. Okay. It looks like tangent but never touch your curve at finite point. आप ऐसे कर्व को ऐसे घुमाओगे तो कहीं ना कहीं कट कर जाएगा. तो इसको ऐसे घुमाना है कि the line should be, it looks like tangent but never touch your curve. That line is called asymptote line. Okay. And tan of minus x is what?
tan of minus theta minus tan x. minus tan theta. दैट मीन्स आपको इधर 0 to pi by 2 जैसे ग्राफ मिलेगा minus pi by 2 to 0 you will get negative of that graph. आप ड्रॉ करोगे you will get graph like this. ऐसे आपको ग्राफ मिलेगा. Is that clear? So this is the graph of tan x but never touch ये सब. इसलिए इसका क्या है डोमेन में ऑड पाई बाय 2 नहीं है. एवरी ऑड पाई बाय 2 पर वो अनडिफाइंड होता है. तो हम ग्राफ उसका डिफाइंड नहीं होगा. अनडिफाइंड मतलब ग्राफ फॉर दैट पॉइंट ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट. ग्राफ एग्जिस्ट करेगा तो वो डिफाइंड होता है. तो पाई बाय 2 पर यू विल नॉट गेट एनीवेयर ग्राफ. पाई पर मिलेगा 3 पाई बाय 2 अगेन यू विल नॉट ग्राफ. 5 पाई बाय 2 विल नॉट ग्राफ. माइनस पाई बाय 2 आपको ग्राफ नहीं मिल रहा है. ओके ग्राफ का पॉइंट नहीं मिल रहा है. इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा है. बाकी सबके लिए मिल रहा है. एंड इट्स लाइज माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी. वो तो मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. तो इसलिए मैंने ऐसे रखा. अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव. अगेन यू विल गेट सेम ग्राफ. सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट यू विल गेट सेम ग्राफ. ओके बट ये टच नहीं करेगा. गलत हो जाएगा. ये कहीं ना कहीं आगे पीछे है लाइन. ठीक है मैं बना देता हूँ. अगेन सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव. विल गेट ग्राफ लाइक दिस. ठीक है. ऐसा आपको ग्राफ करना है. समझा. तो डोमेन क्या दिखाई दे रहा है? व्हाट इज योर डोमेन? ऑल रियल नंबर अदर देन ऑड पाई बाय 2. ऑड पाई बाय 2 पर आपका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं है. तो ऑल रियल नंबर अदर देन ऑड पाई बाय 2. व्हाट इज योर रेंज? minus infinity to infinity. माइनस पूरा ऑल रियल नंबर्स. माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मीन्स y का वैल्यू आप सब कुछ मिल रहा है. अच्छा अब बताओ इज इट पीरियोडिक? No, sir. व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड नाउ? In which interval it is repeating? Same graph? Sir, after pi interval. Yes, every pi interval it is repeating. So it's fundamental periodic function with fundamental period pi.
भी नोट कर सकते हो। y is equal to tan x be a periodic function fundamental period right up. You see the graph y is equal to tan x जो दिस इज द लाइन, ये पाई बाय 2 तो में ड्रॉप नहीं हो रहा है, इट्स ग्राफ लाइक दिस एंड इट इज माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2. This is the line pi by 2 line. This is minus pi by 2. Done. Then what about y is equal to cot x? इधर ही करता हूँ. cot x का ग्राफ कैसे होगा? cot 0 cot 0 infinity.
infinity. Cot pi by 2, 1. pi by 2, 0. tan pi by 2 infinity, तो cot होगा 1 by infinity, 0. 0 की तरफ जाएगा ना, तो you will get ग्राफ. इसका इसी हिसाब से ग्राफ होगा बट उल्टा होगा. अभी तो देखते हैं. You will get graph like this. Correct? फिर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव. ऐसा होगा. करेक्ट ना? ऐसे रहेगा. देखो tan ऑफ माइनस एक्स माइनस tan एक्स, तो उल्टा ग्राफ था, इसमें ऐसे भी रहेगा. cot ऑफ माइनस एक्स द cot x. What about this point, intersection point? 45 degree. 45 degree. Both are equal, na? That's why they are intersecting. Okay. So 0 to pi by 4, which one greater? Cot x. Cot. 0 to pi by 4, if x lies in between 0 to pi by 4, that implies your cot x more than tan x. Then pi by 4 से लेके pi by 2, Cot x less than tan x. cot x less than tan x means tan x more than cot x. Pi by 4 to pi by 2, equal pi by 4. At pi by 4 both are equal. Your cot x less than tan x. Then next pi by 4, this is 3 pi by 4. Next pi by 4 interval, which one greater? Black or red? Red तो नहीं, चलिए. Which one greater? 0 to pi by, sorry, pi by 2 से लेके 3 pi by 4. कौन सा ग्राफ ऊपर है, tan के cot? Cot. Cot. So pi by 2 less than x less than 3 pi by 4. Again cot x more than tan x. Then 3 pi by 4 to लेके pi. Cot x less than tan x. You can check. 3 pi by 4 to pi in this interval. Tan x more than cot x. Okay. तो ये क्या हो रहा है, एवरी पाई बाय 4 इंटरवल इट इज चेंजिंग. साइन कॉस में क्या हुआ था, एवरी पाई इंटरवल में चेंज हुआ था. इसमें एवरी पाई बाय 4 इट इज चेंजिंग. इज इट पीरियोडिक फंक्शन? इज कॉट एक्स इज द पीरियोडिक फंक्शन? Yes. Period, fundamental period. I. Y is equal to cot x
periodic function of fundamental period. Right. You can see here. This is the green graph with the cortex, and blue is the purple is the planets. This point is the pi by 2, pi by 4. Intersection point is the pi by 4. Only कट चाहिए. This is the graph of cortex. कोसेक सेक में मतलब कोसेक बता देता हूँ. This is the cosec graph. It is always more than equal to 1. First quadrant, see, first quadrant and second quadrant, it is positive. Third, fourth, negative. एक
बाय द टाइम आप ये कर लो. Just write down cotton 10. Done. This is the graph of y is equal to cosec x. It's always more than equal to 1. और ये दोनों लाइन 0 एंड पाई उसका असिम्प्टोट बन रहा है क्योंकि 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एवरी एन पाई पर वो अनडिफाइंड है. वो लाइन को कभी टच नहीं करेगा. Neither it is touching your x equal to 0 और x equal to पाई. इसको टच नहीं कर रहा है. एंड इसके साथ मैं साइन का ड्रॉ करूंगा. ड्रॉ साइन एक्स ग्राफ. See the graph. It's lies in sine lies in between 0 to 1. It is more than equal to 1. At pi by 2 both become 1. ये सब आप खुद टेस्ट कर सकते हो. एंड आज cosec x always lies above the sin x in first and second quadrant. So cosec x more than sin x. But in third and fourth quadrant, sin x lies above the cosec x. So sin value greater than cosec. ठीक है. तो आप ट्राई करोगे इसको सेकंड सेक के लिए आप ट्राई करोगे. नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम इसको करेंगे. अच्छा अब बताओ इसका पीरियड क्या होगा कोसेक का पीरियड. after 2 pi. यस. ग्राफ ऑफ 0 to pi is not same as ग्राफ ऑफ pi to 2 pi. दोनों ग्राफ सेम नहीं है, उल्टा है. बट इफ यू कंसीडर 0 to 2 pi ग्राफ, 0 to 2 pi ग्राफ सेम as pi से 2 pi से लेके 4 pi ग्राफ. So it is periodic of fundamental period 0 to fundamental period 2 pi. साइन का 2 pi इसका भी 2 pi. तो ये नोट कर लेता हूँ. Y is equal to cosec x and y is equal to sec x. Both are periodic function.
a fundamental period. All done. So it's all about your graph, domain, range, and periodicity, fundamental period or periodicity. Sir, can you show second graph once again? Okay. This is the graph of sec x. So domain of cosec is r minus n pi. Cosec, yes. Okay. R difference n pi. रेंज दो माइनस इंफिनिट से लेके -1 यूनियन 1 to infinity. This is the graph of sec x. Sec of minus theta is the sec theta. That's why it is symmetric about y axis. देखो मिरर इमेज बन रहा है. मैं cosec को हटा देता हूँ. 0 to pi by 2 graph same as minus pi by 2 to 0 graph. Again it is more than equal to 1, less than equal to -1. इसके साथ y is equal to cos x. It is similar graph. If you check sin cos and cosec sec, सिर्फ 90 का डिफरेंस होता है. आप 90 डिग्री पीछे ले लो, your graph remains same. साइन कस भी ऐसे ही दिखाई दे रहा था, बट साइन ऐसे स्टार्ट हुआ था इधर से, cosec इधर से स्टार्ट हुआ था. ऐसे. इसको मैं 90 डिग्री आगे ले लूंगा. इफ यू टेक राइट साइड 90 डिग्री, then this became your sec became cosec. and साइन को 90 डिग्री पीछे रखेंगे, then sorry this cos को हम 90 डिग्री नहीं, yes, cos को 90 डिग्री आगे ले लो, इसको 90 डिग्री आगे ले लो, then you will get sin graph. Done. Yes, sir. One type of question I forgot to give.
prove that cos theta into cos 2 theta into cos 4 theta into cos 8 theta is equal to sin 16 theta upon 16 sin theta. Sir, Done? yes, sir, done. Okay. Sir, I also had one doubt in one problem for finding the local maximum minimum of trigonometric function. Hmm. So can I send you the question? Local maximum. Yes, sir. Okay, tell me. One second, I'll send you the question. Okay, पहले इसको प्रूव कर लेते हैं. Yes, sir. Okay. LHS. Y is equal to cos x minus root 3 sin x. It's not local. It's global also. 2 is the maximum value, minus 2 is the minimum value. So how to solve it? अभी तक हम किए नहीं ना. Okay, Okay. okay. पर ये We मेजर have, के लिए आ रहा है शायद. no, it's not funny. Okay. We have not done yet maximum minimum. आप लोग क्या फिजिक्स में ये मेरा टारगेट था, मैं लास्ट को बताऊंगा ग्राफ. पूछे इसलिए बता दिया, बट इट इज नॉट ये. ग्राफ का भी क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा. सर तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे मेजर टेस्ट में?
नहीं, Okay, sir. question only from ratio and identities and आपका compound angles, multiple submultiples also. I Okay, think but it is given compound angles only, है ना? yes, sir. Only compound angles is given. Okay. Compound angles means a plus b plus c maximum, like no maximum minimum. So compound angles includes multiple submultiples also. No? You can use just as sine 2 theta. Suppose sine 2 theta, you know, this is multiple submultiples. But you can make sine theta plus theta, na? It is coming from compound angles. Yes. Okay. But the questions I sent you, we were given such questions for assignment in physics. Which one? Just now I sent you one question, similar questions. Cos x minus root 3 sin x, no? Yesterday I discussed, no? Always multiply and divide under root a square plus b square when your question in the form of a sin theta plus b cos theta. No, sir, not this solving part. For finding local maximum minimum. Local, it is not local maximum, it is global, not local maximum. Yesterday हम क्या डिस्कस किए थे? कभी भी if we face any question in the form of a sin theta plus b cos theta, always multiply and divide under root a square plus b square. Yes, sir, this I remember. But question में दिया है कि find local maximum minimum. तो फिर इंटरवल दिया होगा, कुछ इंटरवल दिया होगा, x का इंटरवल दिया होगा. नहीं सर, नहीं दिया. नहीं, then फिर it is globally. Sir, Then ये maybe global हो जाएगा. Global, what is meaning of local and global? जैसे Global means maximum value of the entire function. But yes, this is sin theta maximum value is the 1. It is globally. yes, sir. Okay. But if you consider this interval, then this is called local maximum. Okay. Okay. ये Yeah. locality में, ये local में उसका maximum value क्या है? तो this became the local maximum. तो 1 नहीं होगा वो केस में. Okay. Sir. Okay, local maximum minimum पूछने के लिए आपका क्वेश्चन में कुछ इंटरवल पर्टिकुलर देना चाहिए. If I consider this is the not sin x graph, this is the graph of cos x. If I consider pi by 6 से लेके pi by 2, in this interval, what is the maximum value of cos x? Cos 30 degree. Root 3 by Yes, cos 30 degree. नहीं 60, हाँ 30 degree I have taken. Okay, root 3 by 2 is the maximum value. Okay, तो ये locally ये गुंडा है, मतलब इतना उसका maximum value. तो but globally जो होता है ना, that is पूरा इंटरवल, फुल इंटरवल में आपका पूरे रियल नंबर में जो ग्लोबल होता है, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू इज द 1, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू इज द -1. बट इफ यू कंसीडर दिस लोकेलिटी, इन दिस लोकेलिटी मैक्सिमम वैल्यू इज द रूट 3 by 2 एंड मिनिमम वैल्यू इज द 0. तो कभी भी क्वेश्चन लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम रहेगा तो कुछ ना कुछ इंटरवल देगा. Okay, sir. If you say in this locality, what is the maximum value? Cos 0, 1. 1. What is the minimum value? 0. 0. So that is not satisfying global minimum. Yes. So in this locality, it's maximum 1. So it may be global maximum. It may be global maximum. But in this locality, आपका maximum 1, minimum 0, which is not minimum, not local minimum. Sorry, global minimum. So like that. So, और इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 2, मिनिमम वैल्यू होगा -2, बट ये दोनों ग्लोबली होता है. तो कौन सा लोकेलिटी आपका दिया गया वो देना जरूरी है.
कौन सा इंटरवल, एक्स का इंटरवल क्या है, फिर उसके हिसाब से ये जरूर नहीं कि ये होगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ दिस इज ग्लोबल मैक्सिमम इन 10, कोई भी एक्स के लिए दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। सर आपको ये कैसे मिला? हाँ, आपको ये कैसे मिला 2 और -2? वो तो उसका फॉर्मूला है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिजिक्स वाले पढ़ा रहे तो फिजिक्स वाले बताए होंगे ना। ये नहीं याद रखो, सर, ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू तो माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। ओके सर। ये इसके अंदर वो रहता है, एंड ये उसका ग्लोबल वैल्यू। तो वो लोकेलिटी दिया गया, सपोज वो लोकेलिटी में भी ये सेटिस्फाई कर जाता है, दैट इज करेक्ट, बट हम लोकेलिटी में हम इंटरवल देना चाहिए। जैसे कि मैं इंटरवल में पूछूंगा, इन दिस इंटरवल व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, 1, 1। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, -1, तो ग्लोबल को सेटिस्फाई कर गया। यस। ओके, बट वो जरूर नहीं कि हमेशा सेटिस्फाई करेगा ग्लोबल। तो this is cos theta, cos 2 theta, cos 4 theta, cos 8 theta. How it is sin 16 theta by 16 sin theta. So on the RHS we can use 2 sin theta cos theta. हाँ, कर सकते हैं। You can find out also LHS to RHS. Cos theta, cos 2 theta, cos 4 theta, cos 8 theta, ग्रेजुअली आपका एंगल क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। Multiply 2 sin theta divide 2 sin theta. On your left side, multiply and divide 2 sin theta. 2 sin theta into cos theta. Sin 2 theta. ये क्वेश्चन किए थे क्या क्लास में? No sir. 2 sin theta cos theta, sin 2 theta, then cos 2 theta, cos 4 theta, plus upon 2 sin theta. Again, Multiply divided by formula multiply 2 divide 2 sin 2 theta cos 2 Sin theta, 4 theta. sin 4 sin theta. 4 theta into cos 4 theta into cos 8 theta upon 2 4 into 2, 4 sin theta. Once again multiply 2 divide sin 8 theta. sin 8 theta cos 8 theta upon can I write this is what? Can I write this is 2 square? Okay. Now 2 into 2 square, 2 cube sin theta. When it is 8 theta, 8 theta means 2 cube. 2 cube theta, then here also 2 cube sin theta. Once again multiply 2 divide 2. You will get sin 16 theta upon 16 sin theta, or you can write sin of 2 raised to 4 theta upon 2 raised to 4. Correct na? First step मैंने 2 sin theta cos theta multiply किया, then after I multiplied divide 2 only, 2 ऐसे। So is that clear? Yes, sir. Yes, sir. You can make one note for this question. In general हम इसको generalize कर सकते हैं। Whatever your last angle was 8 theta, 8 का double हो गया 16. If it is 16 theta, then here also 16 sin theta, but आपका beginning theta से होना चाहिए। तो cos theta, cos 2 theta, cos 2 square theta, cos 2 cube theta, and so on up to cos 2 raised to n theta.
is what? नहीं तो 2 raised to n minus 1 theta is what? आपका ईयर ग्रेजुअली क्या हुआ था, एंगल डबल डबल हुआ था ना, मैंने भी डबल डबल किया, 2 थीटा 2 का 2 थीटा डबल 2 स्क्वायर थीटा डबल 2 क्यूब थीटा एंड सो ऑन अप टू 2 रेज़ टू n minus 1 थीटा। आंसर क्या होगा? Sin 2 raised to n theta divided by 2 raised to n sin theta. वेरी गुड। sin 2 raised to n theta upon 2 raised to n sin theta, whatever your last angle का डबल हो रहा है, 2 to the power n minus 1 थीटा का डबल हुआ 2 raised to n थीटा, बट ये थीटा से स्टार्ट होना चाहिए। सपोज ये 2 थीटा से स्टार्ट होगा, आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये 2 to the power n नहीं होगा, इधर 2 to the power n होगा, बट दिस विल नॉट 2 to the power n, it will be 2 to the power n minus 1। मेक इट नोट दिस, इसको मैंने जनरलाइज करके ये बताया। This part we'll discuss later, ना? Yes. Maximum value, minimum value we'll discuss. आपका फिजिक्स में आ रहा है तो you can use this thing. Yes sir, पर अगर कुछ tan और cot के लिए मतलब if it's a combination of tan and cot ऐसे कुछ फॉर्मूला है क्या? नहीं, tan cot का ये नहीं, उसमें AMGM यूज होता है, वो भी डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है सर। फिलहाल अभी मैक्सिमम मिनिमम हम किए नहीं है। ओके सर। चलो, थैंक यू एंड बाय। अच्छा, होमवर्क इज फॉर इन चैप्टर कितने कर चुके हो आप? सर इन चैप्टर आई थिंक ऑल आर डन। ऑल डन। एक्सरसाइज 1A over, 1B also over. No sir, 1B से बाकी. Okay, so except 3 theta 4 theta question and maximum minimum question, you can solve other questions जितना अभी तक जितना हुआ है उसके ऊपर जो भी है। एक्सरसाइज 1B। थैंक यू एंड बाय। सर या मैंने एक्सरसाइज 1 भी मेरे मतलब रफ नोटबुक में ऑलरेडी कर दिया, तो मुझे कॉपी करना पड़ेगा उसको नोटबुक में? ओके सर। अच्छा, असाइनमेंट मैंने क्या दिया था आप लोग को? 1 नहीं दिया था। नहीं, मैंने जो असाइनमेंट 2 तक 2 असाइनमेंट 1 और 2 हुआ है ना, ठीक है, असाइनमेंट 3 में डाल देता हूँ। चलो, थैंक यू एंड बाय। बेस्ट ऑफ लक योर Thank you sir. Thank you, sir. Thank you sir. थैंक यू सर। बाय।